let's start with our F5 performance management PM. ठीक है, आपको फॉर्मेट तो पता होगा आपके ऑफिस इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, there will be 3 sections, section A, B and C. ठीक है, section A में you will be getting all the MCQs, drop down type of questions और boxes में जिसमें आपने fill in करना है, और there will be some drop down. In section B, there will be essay or short answers type questions where you have to write your whole comment. ठीक है, for that you need to be aware कि भैया क्या लिखना क्या है इसके अंदर, और rather than writing 1 to 2 points, write as much points as you can, because obviously it's a computer based, so some AI will be evaluating your answers. Artificial intelligence है जो आपके answers को evaluate कर रही है. तो सिनेरियो में ऑब्वियसली जो उसके एआई में है वो अगर उसको मिल गया तो he'll give you an answer, और नहीं मिला तो आपका सही होते हुए भी नहीं होगा. तो बेटर टू राइट एज मच एज यू कैन बट टू द पॉइंट, कंसाइज. और कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके फॉर्मेट बेस्ड, मेमोज एंड ऑल, तो उस सिनेरियो में आपको यू शुड बी अवेयर ऑफ द फॉर्मेट कंप्लीट. तो जितना भी है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर मैनेजमेंट अकाउंट. जो आपने मेरे वाले लेवल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा था, ये उसी का ही एक तरीके से एक्सटेंशन है. इफ यू आर गुड इन दैट, बेसिकली मान लो ये 1 स्टेप अहेड है. तो इसका आपका फर्स्ट चैप्टर भी पहले हम वही रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. तो आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप ही रहेगा. ठीक है, तो इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विद 3 सेक्शंस, each section having different types of questions. It can be MCQs or drop downs or anything. And other 2 formats you need to write. अभी तक हम MCQs कर रहे थे, है ना, हमने FA में भी यही करा. It was drop down kind of. हाँ, FA में भी ऐसा ही होता है, but we are giving it for the first time. Okay, so it's entirely computer based. Okay, you need to be in front of the computer proper, और सब कुछ computerized है. आपको सारे formats इसी में ही है. Everything is drop down और a spreadsheet type of, जिसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे. तो everything is there only, आपको बाहर से कुछ नहीं करना. ठीक है, सब कुछ वहीं होगा. Your workings, your answers, everything will be on the computer room. कुछ भी आपको बाहर से नहीं जाना. Calculator you can use. Calculator you can use. बाकी सिस्टम में भी वो जो उनका जो आपका फॉर्मेट होता है उसमें कैलकुलेटर अलग से प्रोवाइडेड होता है, तो आप वहां से भी यूज कर सकते हो फ्रॉम देयर स्क्रीन, और आप अपना फिजिकल वाला भी यूज कर सकते हो. प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बाकी आई गेस ये भी वही होगा कि एट द मोमेंट ये आंसर आपका रिजल्ट आ जाएगा. इसका मेरे को थोड़ा सा डाउट है, विल क्लियर इट 1 मंथ के बाद. ओके, क्योंकि वो तीनों एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आ जाते हैं, तो ये 1 मंथ बाद ऑब्वियसली एआई होगा. तो वो ये जितना आप अच्छे से लिख सको, यू मस्ट बी नोइंग. एंड और जब भी आप इसका प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ऑन कंप्यूटर, क्योंकि हमें आदत होती है पेन एंड पेंसिल की, राइट. हाँ, तो यू आर प्रिपेयरिंग, आप रिविजन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ट्राई टू डू इट ऑन दी स्क्रीन ओनली, जिससे आपका टाइपिंग स्पीड बढ़े, है ना, क्योंकि आपने उसमें आंसर्स लिखने हैं. तो आपका टाइपिंग स्पीड गुड हो. जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, वेयर टू पुट द कॉलन, सेमीकोलन, इन सब का आपको अवेयरनेस रहे कि आंसर्स कंसाइज और टू द पॉइंट आ जाए. ठीक है, तो whenever you practice from now onwards, practice on a screen only. ठीक है, आपको स्क्रीन पर ही प्रैक्टिस करना है. Now let's फर्स्ट चैप्टर कह लो या इंट्रोडक्टरी कह लो, आपका रिविजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. Division of management accounting. What is management accounting? क्या होता है management accounting? देखो, अकाउंटिंग की जो आपकी फील्ड है, बेसिकली इट इज डिवाइडेड इन 3 मेन पार्ट्स. आप अगर एक मेन अकाउंटिंग की बात करो, तो अकाउंटिंग इज अ ट्री. इट हैज मेन 3 ब्रांचेस. छोटी छोटी तो बहुत सारी है. मेन 3 ब्रांचेस में एक होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हिच डील्स विद फाइनेंस ओनली.
The second one is your cost accounting, which deals with the costing of any product. The last one is your management accounting. It basically is a combination of both. कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करके दे रहे हो, आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी करके दे रहे हो, और ऐसे रिपोर्ट्स बनाकर दे रहे हो या ऐसे करके दे रहे हो which helps the management and decision making. मैनेजमेंट का क्या काम है? डिसीजन मेकिंग करना है ना. मैनेजमेंट का क्या काम है? they have to decide, they have to make decisions. तो आप उनको ऐसे दो कि वो उसको डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प करे, ठीक है, टू द पॉइंट दो. दे आर नॉट, उनको नहीं है इंटरेस्ट आपके लेजर्स में या आपके ट्रायल बैलेंस, उनको किस में इंटरेस्ट है? आपकी बैलेंस शीट में, और उस बैलेंस शीट में भी कैसे आप पहुंचे उसमें, या क्या डिफरेंस था, क्यों डिफरेंस था. या कॉस्टिंग की हम बात करें तो बजट हमने क्या बनाया, क्या आया, व्हाट आर द वेरिएंसेस, व्हाई द वेरिएंसेस अराइज. हमें मैनेजमेंट को टू द पॉइंट देना है ना. आप बताओ, आप मैनेजमेंट हो और मैं आपके सामने 100 शीट्स का एक बुक रख दूं कि भैया पढ़ के डिसीजन बना लो, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. और भी काम करना है, और वही 100 पेजेस का मैं क्रक्स 10 पेज का रिपोर्ट में दूं, वो भी एकदम ग्राफिकली अच्छे से, तो लाइक ओके आई विल मेक द डिसीजन, राइट. तो वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग था हमारा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने वो सारी चीजें करी जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती. ठीक है. अब इसमें हमारा था क्या क्या, जस्ट वन, फॉर्मूलाज वगैरह आपको सब मिल जाएंगे उसी में ही, ठीक. अब इसके अंदर इफ फॉर्मूलाज वगैरह आपको वही उसी में ही होते हैं. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द साइड बटन, तो वो फॉर्मूलाज खुल आ जाते हैं. हाँ, मोस्टली नहीं, वो फॉर्मूला शीट में ही होते हैं जो लंबे लंबे से होते हैं, वियर्ड से रिग्रेशन एनालिसिस वाले, वो सारे आपको उसी में ही मिल जाते हैं, ठीक है ना. तो अब अगर हम बात करें, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट, ठीक है. फिर भी अगर आपको लगे मैं जल्दी या स्पीड में हो रहा है तो यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम कि मैम जल्दी हो गया, रिपीट इट. और कोई भी डाउट हो अपने तक मत रखना, क्लास एंड होने तक पूछ लो, घर जाके रिवाइज कर लो, नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछ लो. डोंट अपने पास मत रखना, जो बाद में बहुत ज्यादा हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है. जो डाउट्स है साथ साथ पूछ के खत्म कर देता हूँ, ठीक है. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक थिंग्स. एक होता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपने कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी, ठीक है. एक होती है हमारी ब्रांच स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विच डील्स विद बजट्स, फ्लेक्सिबल बजट्स, फिक्स्ड बजट्स, ठीक है, उनका कंट्रोलेबिलिटी, इन सब कार्य बारे में होता है. और दूसरा होता है आपका बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विच मींस वेरिएंस, कि आपके बजट और आपके एक्चुअल में व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, उसे हम डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस, ठीक है. बजट्स क्या होते हैं? बजट्स बेसिकली जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे क्या करेंगे उसके बारे में पहले से ही सारी प्लानिंग कर लेती है, सारे एक्सपेंसेस की, सारी इनकम्स की, उनको हम बजट्स बोलते हैं. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर अ नंबर ऑफ बजट्स, सेल्स, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, देयर आर मेनी फंक्शनल बजट्स दे प्रिपेयर. उन बजट्स को जब हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जो डिफरेंस आता है, जैसे हम हाँ, मतलब यू हैव प्रिपेयर्ड बिफोर हेड. मतलब हमने अभी 31 मार्च 24 आएगा, 31 मार्च 24 तक का हम ऑलरेडी बजट बना चुके हैं. जैसे बजट में होता है ना, वी आर एलोकेटिंग दिस अमाउंट टू दिस पर्सन, और बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि एक्चुअल में वैसा किया कि नहीं करा ना. 31 मार्च को जब आपके पास टोटल सब कुछ आ जाएगा तो यू विल कंपेयर कि जो हमने सोचा था और जो एक्चुअल में हुआ, वेदर दे आर मैचिंग और नॉट, और नहीं मैच कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, है ना. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई डायरेक्ट मटेरियल मेरा 2 रुपीज पर यूनिट मिलना चाहिए मेरे को, ठीक है, बट वो एक्चुअल में मुझे मिला 4 रुपीज पर यूनिट. व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? दिस डिफरेंस इज व्हाट? दिस डिफरेंस इज वेरिएंस व्हिच वी स्टडी इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है. अब इस डिफरेंस का भी हमें रीजन ढूंढना होता है. ये हमारा आता है बजटरी कंट्रोल में, से हम बोलते हैं बजटरी कंट्रोल, ठीक है. इस डिफरेंस का भी क्या रीजन था?
हमने क्यों 2 रुपीज पे बजट किया और वाई देयर इज हमने परचेज क्यों 4 रुपीज में करा, whether the production department is lacking or the procurement department is lacking, कहाँ प्रॉब्लम आया, you need to know the reason, तभी आप जब दोबारा बजट बनाओगे तो उस हिसाब से बनाओगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल, ठीक है। और the difference is known as variance, which is a complete subject of standard costing, जहाँ पे हम वेरिएंसेस देखते हैं कि इज इट एडवर्स, एडवर्स मतलब बैड, जैसे ये हमारा बैड है, और नेक्स्ट इज फेवरेबल कि ओके इट इज गुड फॉर यू, आपने 2 रुपए सोचा था और 1 रुपया पर यूनिट मिल गया, दैट इज अ फेवरेबल वेरिएंस फॉर यू, है ना, और नहीं मिला दैट इज एन एडवर्स वेरिएंस। उसके अलावा सेकंड फील्ड होती है इसकी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बेसिकली डील्स विद योर एब्जॉर्प्शन एंड योर मार्जिन, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग डील्स विद योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड योर मार्जिनल कॉस्टिंग। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन मैनेजमेंट अकाउंट। हमने ये सारा कुछ उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज मार्जिनल, बट स्टिल बिकॉज वी हैव अ फर्स्ट चैप्टर हियर ओनली, तो हम इसमें थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, कुछ जस्ट गेट टू यू नो सेटल ईच अदर कि भैया हमारा ये सेंस रहता है, राइट। एकदम से मैं मेन पे आ जाऊंगी तो वो आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा, ठीक है। यू वांट टू राइट समथिंग, यू कैन। Done? अब that was the overview. अब हम थोड़ा सा टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज कॉस्टिंग, कॉस्टिंग होती, वो भी आगे आ जाएगा, मतलब वो इन डिटेल आ जाएगा। इट इज बेसिकली आपके मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, जहां पर जस्ट एन ओवरव्यू, एब्जॉर्प्शन होता है जब हम लोग किसी भी इनडायरेक्ट ओवरहेड, यू नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जब हम कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस को किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं, वो किस बेसिस पे करते हैं, दैट इज ऑल डेल्ट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली डील्स विद ओनली योर वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिन, वो कहते हैं फिक्स्ड विल रिमेन कांस्टेंट, आप कुछ करो या ना करो फिक्स्ड विल रिमेन फिक्स्ड। हम सिर्फ मार्जिनल देखते हैं, मार्जिनल कैसे आता है आपका, वेरिएबल, तो मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली डील्स विद योर वेरिएबल एक्सपेंसेस, ओके। लेट्स गो टॉपिक वाइज थोड़ा सा। पहले होता है व्हाट इज कॉस्टिंग, मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। क्या कॉस्टिंग का पर्पस है? फर्स्ट एंड द बेसिक पर्पस इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। हम कॉस्टिंग किस लिए करते हैं? इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के लिए। इन्वेंट्री इज द स्टॉक, राइट, स्टॉक को वैल्यू करने के लिए। दूसरी बात, व्हाई वी डू कॉस्टिंग, ऑब्वियसली टू रिकॉर्ड द कॉस्ट, आप कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए
कॉस्टिंग करोगे, ठीक है। और हमें इससे क्या पता चलेगा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हमें कॉस्ट ही नहीं पता चलेगी तो हाउ कैन वी प्राइस द प्रोडक्ट। अगर मेरी कॉस्ट 100 रुपीज आ रही है तभी आई कैन प्राइस इट फॉर 120 ना, टू गेन द प्रॉफिट। इफ आई डोंट नो मेरा कॉस्ट क्या है तो मेरे को प्राइस करना विल बी इररेलेवेंट ना। मुझे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है मुझे उसका आइडिया ही नहीं होगा। तीसरा होता है आपका to make the decisions, to make decisions. So this is the basic purpose of costing, to make decisions. Okay, and everything will talk in dollars and no rupees, nothing. There will be no rupee sign anywhere. There will be everywhere dollars sign only. So you have to use that only. Okay, na? Chalo. That is the purpose of costing. उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम अभी मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम कहाँ करते हैं, जहां हम बजट लगाते हैं, है ना। तो जहां पे आप प्री डिटरमाइन कर सको अपनी यूनिट कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ सम सर्टेन कंडीशंस, कि अगर मेरा 80% एफिशिएंसी है तो मेरी कॉस्ट 100 रुपीज है। इफ माय एफिशिएंसी इज द लेवल ऑफ वर्किंग, ठीक है, कितना मैं वर्क कर रहा हूँ, कितना मेरा प्लांट वर्क कर रहा है। तो अगर मेरा एफिशिएंसी इज 80%, माय कॉस्ट इज 100 रुपीज। इफ माय एफिशिएंसी इज 100%, माय कॉस्ट विल रिड्यूस टू 80 रुपीज। तो ये मेरा प्री डिटरमाइंड है कि अगर मेरा ये रहेगा तो मेरी कॉस्ट ये रहेगी। तो जहां पर भी हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं वहां पे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें a standard cost in writing समझ आ रही है, a standard cost for a product or service is a predetermined, it's a predetermined unit cost, predetermined unit cost set under specified circumstances, set under specified circumstances. Specified circumstances, my efficiency level, predetermined unit cost, I've already explained. ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, obviously to have control, you need to control. आप पहले ही प्रीडिटरमाइन कर दोगे तो आप उससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं करोगे, राइट। कि आपको 100 कॉस्ट लानी है तो एवरी डिपार्टमेंट विल एंगेज कि भैया 100 ही कॉस्ट आ रही है, इससे ऊपर नहीं आना। नो इट्स ठीक है, जस्ट फटाफट ज्वाइन इन हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पर्पस क्या होता है हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, इज प्लानिंग। It's planning only, right? Or performance measurement. Because we have budgets, we have predetermined units, तो हम उससे performance measurement भी कर सकते हैं। कौन से डिपार्टमेंट ने नहीं सही से काम किया, which department is up to the mark, which department was not up to the mark, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो you can give them appraisals and all। तो सारा performance measurement भी हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हो सकता है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मोस्ट सूटेबल कहाँ पर होती है, कहाँ पर होगी आप बताओ, जहाँ पे आप प्रीडिटरमाइन कर सको कॉस्ट को, ऑब्वियसली। तो हाँ, मैं कह रही हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज कर सकते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज कर सकते हैं, मोस्ट सूटेड कहाँ पर होगा, जहाँ पे आपका होमोजीनियस काम है, एक ही काम यू आर डूइंग ऑन अ रिपीटेटिव थिंग, वहां पे आप पहले से ही प्लान कर सकते हो, वहां पे आप पहले ही प्री डिटरमाइन कर सकते हो कि कॉस्ट अभी 100 आई है तो नेक्स्ट ईयर 110 आएगी इन्फ्लेशन की वजह से, है ना। तो मोस्ट सूटेड की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ पर है, वेयर यू आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, और आपका कोई रेपिटेटिव असेंबली लाइन है, रेपिटेटिव असेंबली वर्क है,
वहां पे you can use this standard cost. ठीक. Repetitive assembly is कि एक ही टाइप का काम आपको बार बार करना पड़ रहा है. Repetitive assembly work, kind of if you are assembling this chair, तो एक बंदा उसको 100 chairs करनी है, तो you know कि अगर वो एक चेयर को 10 minutes लगा रहा है तो यार इतने टाइम में कर लेगा और उसका कॉस्ट इतना ही पड़ेगा. That is repetitive assembly. और एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको और कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आपको पता है कितने में मटेरियल मिलेगा, कौन सप्लायर्स है, यू आर वेल अवेयर ऑफ इट. तो वहां पे आप प्रीडिटरमाइन बहुत इजीली कर सकते हैं. Yes, bachcha. कंट्रोल कैसे हो सकता है कि if I am saying my cost, अगर मैं मैनेजर हूँ और मैं अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहूँ कि मुझे 100 रुपीज कॉस्ट चाहिए, तो I can control their expenses, है ना. अगर मैं कहूँ मेरा बजट ऑन एडवर्टीजमेंट इज 500 रुपीज ओनली, तो what I'm controlling their expenses ना. तो मैं बजट दे दूं कितने में ही करना है. जब मम्मा भी तो हमें कहती है ना कि भैया 1000 रुपए ले जाओ, महीने के से ज्यादा नहीं मिलेंगे. That is what she is controlling your expenses ना, कि इससे ज्यादा तुम खर्च ना करो. और प्लान आपको करना है कि उन 1000 रुपीज को हाउ यू विल स्पेंड, अभी सेव कर लो, नेक्स्ट मंथ यूज कर लेना. दिस इज ऑल प्लानिंग. और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे होता है कि भैया अगर तुमने 1000 रुपए में से 200 रुपए बचा लिए, यू आर गुड. और अगर यही मंथ के एंड में तुमने 200 रुपए एक्स्ट्रा मांग लिए, तो यू आर, है ना. तो दैट इज द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, राइट. You are new. Okay, you are there on the online. हाँ? Yes. हाँ योगी यार, बिल्कुल नहीं थी. And you are there? Sorry? Sonika. So you are both are exemption for the knowledge levels? Yes. मतलब knowledge level में exemption. No, you are skipping. Okay. So you are graduated or what you do in graduation? Graduated? So you are working? I'm just waiting. Okay. Ash and Sonika. Let's do one test your understanding. This type of formula sheet you will be given in the examination also. Exam may be this type of sheet of formulas you will be given. You will be provided with a calculator option, formula sheet, or a working note sheet. मतलब that word or journal type of they'll तो that जो उनको support करता होगा उनके application को, वो सब इसमें automatically feeded होता है. You just have to download their application. Okay, this is your understanding one. Whatever we have done till now, उसकी basis पर ही there are certain understandings, so time to time आती रहती हैं. Okay, which of the following organizations may use standard costing? The suitability of standard costing on a bank, a kitchen designer, or a food manufacturer. Standard costing will be applicable on what of the following? 1, 2, 3, 1 or 2, 2 or 3, or 1 or 3. Okay.
Akashu, we just did abhi, so it's 1 and 3. 1 and 2. 1 and 2, and she is saying 1, 2 and 3. Second and third. Okay. And if I say first and third, then why a kitchen designer? Because maybe the products like kitchen designer. That I'm focusing on the word designer. It's kind of interior decorator types. Every person has a different demand. In some kitchens, the time you may take less time, but in some kitchens, it is so elaborate that you may require more time. Right? It's kind of, that's why I'm focusing on the word design. It's a kitchen designer, kind of interior decorator. So सबका the choice of elaboration is different. कहीं पर you are taking a lot of time, और कहीं पे it is just 1-2 kitchen slabs and you are done with it. So standard costing is basically applicable जहाँ पे there is a monotony of work. In a bank it is monotony. Monotony होता है, right? और food manufacturer के लिए भी monotony है. But the food manufacturer जो है, उसमें तो like जो prices होते हैं वो constant ही रहता है, like fluctuation बहुत होती है. But if you are preparing Lays, so Lays is constant past the time I know. है ना? For that food manufacturer जो भी उसका labor है, so perfect कि भैया ऐसा ही डलना है, होना है ना? 1 बोरी जानी है तो 1 ही बोरी जानी है आलू के, इतना नमक जाना है तो इतना ही जाना है. Every chip tastes the same, है ना? And since the time we know, है ना? So for a food manufacturer, the price may change, but the process is the same. That's why it's a monotony of work, or the assembly thing we are saying, repetitive assembly. ये repetitive assembly in a food manufacturer. Okay. Are you aware, Pivya, the format of cost sheet? क्या होता है cost sheet? ठीक है. Cost sheet is basically a summary of all your expenses incurred for producing a product. ठीक है. एक summary होती है उन सारे expenses की जो किसी भी product को manufacture करने में लगते हैं. All our expenses are divided in 3 parts या 2 parts कह लो. Direct expenses or indirect expenses. Direct expenses are those expenses जो directly उस manufacturer में है. Like your direct material, your direct labor, your direct wages कह लो, या फिर electricity, factory rent, ये सारी चीजें which is directly related for the manufacturing of a product. Indirect expenses are those जो उस product को manufacture करने के बाद आते हैं. For example, advertisement, है ना? Transportation, right, from factory to the distribution channels. Advertisement, because obviously वो हम एक product के लिए नहीं करते हैं. We cover as many as we can. तो वो एक product से related हमारा नहीं होता. उसके अलावा all your finance department, your HR department, they are indirectly related, but पूरा product में नहीं जा रहे हैं. हम salaries की भी बात करें तो salaries of the जो वहाँ पे supervisors है in a factory, वो आपका direct expense है. But salaries of your finance manager is an indirect expense. Salary of your sales manager is an indirect expense. पर यही आपका salary of a production manager or procurement department manager, obviously it's a direct expense. तो सब आपका nature पे depend करता है of the organization. Nature जो भी होगा, if you are in a CA firm or a CMA firm, CS firm, वहाँ पर आपका obviously finance department ही आपका main है, direct है ना? वहाँ पे आपका indirect क्या होगा, your cab drivers, your admin department में जो है या HR में जो है.
लेकिन जो आपके सीएस हैं, इंटर्न्स हैं, उनका जो पेमेंट जा रहा है, दे आर ऑल डायरेक्ट. तो इट विल डिपेंड, ऐसा कोई पर्टिकुलर उसका डेफिनेशन नहीं है. हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन डिफर. ठीक. अब जब भी हम बात करते हैं तो वी प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट. उसके अंदर हमारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो होते हैं. On the nature of it, we divide expenses in three parts: variable cost, variable expense, fixed expense, और your semi-variable expense. इनको हम overhead word use करते हैं in costing. We don't use the word expense. We use the word overhead. Overhead is similar to expense only. Variable overhead, fixed overhead, and semi-variable overhead. Now, what are these? Variable overhead basically होते हैं which vary from product to product. ठीक है. अगर डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 1 यूनिट को बनाने में 4 kgs लग रहा है तो वो वेरिएबल है. If you are preparing 1 unit 4 kgs ही लगना है. If you are preparing 2 units वो 8 kgs ही लगेगा. It will vary. Fixed overhead will remain constant whatever you do. आप जितना मर्जी प्रोड्यूस करो या ना करो उतना ही जाना है. रेंट, आप वहां उस फैक्ट्री में 10,000 यूनिट्स बनाओ या 1 लाख यूनिट्स, योर रेंट विल रिमेन कांस्टेंट. उतना रेंट देना ही देना है. सेमी वेरिएबल्स आर बेसिकली योर टेलीफोन एक्सपेंस. एक टाइम तक फिक्स, उसके बाद इट विल इंक्रीज. प्रीपेड बिल मोबाइल का, प्रीपेड नहीं पोस्टपेड, सॉरी, द पोस्टपेड बिल इतना बेसिक है. उससे ज्यादा आप खर्च करोगे तो इट विल वेरी ऑन योर कंजम्पशन. दैट इज अ सेमी वेरिएबल ओवरहेड. इलेक्ट्रिसिटी, वही मैं कह रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टपेड बिल, कोई भी जहां पे आपका एक पॉइंट तक इट्स कांस्टेंट, बट जैसे आप फिर उस पॉइंट को क्रॉस करोगे इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू योर कंजम्पशन. तो सेमी वेरिएबल इज अ मिक्स ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. अब जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, दैट्स द बेसिस ऑफ इट. जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो वी स्टार्ट विद टेकिंग आवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल and your direct labor and all your direct expenses. और इन तीनों कॉस्ट को हम मिलाकर क्या बोलते हैं? दिस इज आवर प्राइम कॉस्ट. ये हमारी कौन सी कॉस्ट होती है? हमारी प्राइम कॉस्ट. ठीक है. इस प्राइम कॉस्ट के बाद व्हाट वी टेक इज, हम इसके अंदर लेते हैं ऑल आवर फैक्ट्री ओवरहेड्स. ऑल आवर फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब जो फैक्ट्री से रिलेटेड आपके ओवरहेड्स हैं, एंड वी केम टू आवर फैक्ट्री कॉस्ट. फॉर्मेट यही है, ऐसे ही आता है. अच्छा, द कंप्लीट फॉर्मेट. ओके, यू वांट मी टू ड्रॉ लाइंस एंड एवरीथिंग. ओके, हाँ हाँ ठीक है ना. इट्स अ कॉस्ट शीट. यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स होते हैं, यहाँ पे अमाउंट इन डॉलर्स होते हैं. ठीक. तो आफ्टर एडिंग ऑल द फैक्ट्री ओवरहेड्स वी केम टू फैक्ट्री कॉस्ट. इसके अंदर वी एड ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू योर, जैसे not admin, all your indirect expenses जो आपके रिलेटेड टू फैक्ट्री होते हैं. इसके बाद हम क्या निकाल देते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आफ्टर एडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम जब इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं तो वी केम टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. एंड व्हेन वी ऐड प्रॉफिट टू इट वी केम टू फिक्स. ये थोड़ा और डिटेल्ड होता है, बट अभी के लिए हमें इतना काफी है. वो डिटेल होता है.
कुछ समझ ना आए तो पूछो। If noted, let's move. Then, okay. Here's the question. क्वेश्चन क्या हो रहा है कि थोड़ा ब्लर हो रहा है? Now it's okay. ठीक. K Limited makes two products. Information regarding one of those product is given below. Your budgeted output oblique sales. Budgeted output मतलब it is an estimated one is 900 units. Okay, you are producing 900 units. अब आपको क्या डिटेल्स दी हुई है फॉर 1 यूनिट? 1 यूनिट का आपको क्या डिटेल दिया हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है आपका 40 स्क्वायर मीटर्स एट द रेट 5.3 पर स्क्वायर मीटर. दिस इज योर डायरेक्ट मटेरियल फॉर 1 यूनिट. डायरेक्ट वेजेस लग रहे हैं, देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स. बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में 24 आवर्स लगते हैं एट ₹5 पर आवर, एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 15 आवर्स लगते हैं फॉर 4.8 आवर्स. दिस इज फॉर 1 यूनिट. एक यूनिट को बॉन्ड करने में 24 आवर्स लगते हैं, which is 5 per hour the labor takes. And finishing department में 15 आवर्स लगते हैं, which 4.8 per hour the labor takes. Variable overhead है 1.50 per bonding labor hour, and 1 per finishing labor hour. This is your variable overhead dependent upon the departments. Then you have fixed production overhead and fixed non-production overhead. Fixed, it will remain constant whatever you do. ठीक है? अब आपका requirement क्या है? Your requirement is you are required to prepare a standard cost card for 1 unit. And आपको क्या क्या चाहिए? Prime cost, variable production cost, total production cost and total cost. मतलब ये sequence में आ जाएगा. Then you have to calculate the selling price, allowing a profit of 25% of the selling price. ठीक है? दोनों क्या चाहिए वो क्लियर है? हम ऐसे छोटा करोगे तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट ना. तो मैं इसे बहुत छोटा कर दूंगी फिर वो आपको दिखेगा नहीं. or else you can join यहाँ पर ताकि वो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो. ऐसा भी कर सकते हो.
Yeah. Okay, let's prepare the cost card. पहले हमें क्या चाहिए? Prime card, prime cost. So, how much is our direct material? Test your understanding too. Is 1 meters. 1 meter is $5.36. So 5.30. How much is it? In dollars? 212. Then we have direct wages. Direct wages में we have two departments, bonding and finishing. And it will be 24 hours, 5 per hour. So obviously 24 multiplied by 5 and 15 hours multiplied by 4.8. So it will be 120 and 72. The sum of all three is known as prime cost. Our first part, calculate the total of prime cost. You just have to write the total of this. Okay, you must be having a drop down box or an empty box in front of this. You just have to write the total of these three. Okay, and the total will be 404. Next, we want variable production overhead. So let's add variable overhead to it. Variable overhead. It's 1.5 per bonding labor hour. So how much is the bonding labor hours? 24 hours. And it's 1 per finishing hour, so 1 into 15. 15, the total how much is? 36 and 15. So how much is our variable production overhead? Variable 540. Variable production overhead is 10, 15, 1, 5, 455. This is our variable production overhead. Now we want the production cost. So for that, we'll add fixed production overhead to it. Now, how much I'll add? $36,000 or the per unit cost of it? This 36,000 is for 900 units, na? So per unit kitna ho gaya? Divided by 900, that is 40. So how much is your production cost? Total production cost is 495. Now you want the total cost, so we'll add fixed non-production cost, non-production overhead, that is 27,000 divided by 900, 30. And my total cost is 525. Are we here?
Can you tell me the selling price? Okay. This is your cost. If you're done, then calculate the selling price if you can. $56.25. How? It's 700 in total. You are like 25%. 25% of the selling price. You are adding to the cost price. It is 25% of the selling price. Will add cost profit to it, and you'll reach at selling price, which is American. So basically, it's 25 of the selling price. Yes, exactly. 25% of the selling price होता है तो 20% of the cost होता है. वैसे बताया जाता है. आपने कैसे निकाला? Divided by process. इतना दूर नहीं जाना. एक shortcut होता है. If it is 25% of the selling price, then it's 20% of the cost. ये मतलब एकदम बेसिक वाला चीज होता है. You can calculate it, but हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना. ठीक है. So if it is 25% of the selling price, then 20% of the cost. If it is 1/3 of the selling price, then 25% of the cost. If 33.3 होता है ना, 1/3 of the selling price, then 25% of the cost. इस सिंपल फॉर्मूला से कर लो तो भी यही आएगा, है ना. 525 का 20%. ठीक है. और this is 75, हमको 25 चाहिए. The basic calculation होता है ना कि ये आपका 75 है तो 25 कितना होगा? The basic multiplication. That is 700 and your profit is 175. क्लियर है यहाँ तक? I guess it's हाँ into 20% वो आ नहीं रहा. तो ऐसे ही है. Okay. It's 25. Second. No. 1 second. Yep. It's always more. So if it's 25% of the selling price, then 1/3 of the cost. Sorry, it's always more. Cost हमेशा ज़्यादा होगा. And if it's up हो जाएगा, right? And if it is 20% of the selling price, so 25% of the cost. Cost is always more. थोड़ा सा क्या? जितना हमने यहाँ तक किया, is it clear? और wavelength match हो रहा है, speed match हो रहा है. मैंने आगे let's come to the types of budgets. Types of standards. Budgets तो भी दूर है. Standards. Types of standards. Standards are of 4 types.
The first one is attainable standard. बेसिकली ये वो स्टैंडर्ड है जो आप इजीली अटेन कर सकते हो. दिस इज योर अटेनेबल स्टैंडर्ड. कितना हम अटेन कर सकते हैं नॉर्मल एफिशिएंसी पे, विच इज नॉट द परफेक्ट वन. कि हमें पता है हम 70% बिना पढ़े भी ले आएंगे. दिस इज आवर अटेनेबल स्टैंडर्ड, बट वी इफ वी वर्क हार्डर तो हम ज्यादा ला सकते हैं. तो हमारा परफेक्ट नहीं, बट हाँ हमारी नॉर्मल एफिशिएंसी पे जो भी हम अटेन कर सकते हैं, दैट इज एन अटेनेबल स्टैंडर्ड. देन वी हैव द बेसिक स्टैंडर्ड. बेसिक स्टैंडर्ड इज जो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, अनचेंज्ड है. आई राइट थोड़ा थोड़ा अबाउट दिस. दिस इज योर नॉर्मल स्टैंडर्ड. पिछले साल भी यही था, अब भी यही है. दिस इज योर बेसिक स्टैंडर्ड. करंट स्टैंडर्ड जो अभी अभी आपने चेंज करा. यू केम विद अ व्यू कि भैया आई जस्ट वांट 60-65, बट आफ्टर रीडिंग समथिंग, मतलब हाफ चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद यू आर लाइक नो यार आई कैन स्कोर 80+. दैट इज योर करंट स्टैंडर्ड. 60 was attainable, current is your 80. Ideal standard जितना आपको लाना चाहिए. This is your ideal standard. 100% करने के बाद at the perfect operating conditions आप कितना achieve कर सकते हो, that is your ideal standard. So these are the 4 types of standards. Attainable based upon efficient working conditions. Based upon efficient, which is not so perfect. Not perfect working condition. Basic are long-term standards. Long-term unchanged standards. Current जो भी अभी हमने based on current working conditions. Ideal based on perfect working conditions. Attainable is more realistic, obviously. Ideal is not realistic at all. It may act as an adverse notification. It may act as an adverse notification, right? भैया तुमसे कोई कहते 100 out of 100 पागल हो गए थे, है ना, और कोई कहे नहीं वो भी लाया था इसलिए तुम भी लाओ, तो it doesn't act as a motivation at all, है ना. Current standards, it just improve your working conditions, nothing else. And basic, you are used to it. It cannot highlight the current efficiency. Attainable standards always include your idle time. Because it is attainable, it always include your idle time and waste of material. क्योंकि ये attainable है. Idle time मतलब खाली बैठने वाला टाइम. Idle time हाँ, मतलब you cannot study 24 hours ना, बीच में आपका कोई ना कोई idle time होगा, तो traveling time or something, or you are taking break or what, तो वो हर जगह होता ही होता है. ठीक. On the basis of this, next test your understanding. You're coming from nearby and you're very far.
Okay. Done. Let's do test your understanding 3. Okay. Visible? Visible? The fastest time in which a batch of 20 spicy meat special sandwiches has been made was 32 minutes with no holdups. You have prepared. A fastest time is 20 spicy meat specials is 32 minutes with no holdup. मतलब यार आपको ideal time दे ही नहीं रहे. However, work studies have shown that on average, about 8% of the sandwich maker time is non-productive. On an average, studies के हिसाब से 8% of the total time is a non-productive time. And that in addition to this, setup time is 2 minutes. Okay, out of the complete time जो भी है, उसमें से 8% time is your non-productive, and 2 minutes you require for setting up everything. Okay. If the sandwich makers are paid 4.5 per hour, what is the attainable standard labor cost? अगर मैं इस attainable को हटा के बोल दूं your ideal standard cost क्या होना चाहिए? मैं question 2 कर रही हूँ इसके अंदर. पहले attainable and then ideal. पहले मुझे बताओ attainable time क्या होगा? मैं इसमें करूँ. आपका टोटल टाइम कितना है? 32 मिनट्स. लेकिन हम सारी चीजें मिनट्स. 8% आपका आइडियल होता है विच इज नॉन प्रोडक्टिव. तो टोटल टाइम में से 8% इज नॉन प्रोडक्टिव. तो दिस इज व्हाट? दिस इज माय 98%. तो 2% कितना हुआ? सॉरी 92%. तो मेरा 8% कितना हुआ? दिस इज माय 92%. तो 8% मेरा आइडियल नॉन प्रोडक्टिव आइडियल टाइम कितना हुआ? That 22% is not. No, it's not. Because the sandwich maker will have 8% of the non-productive ideal time. हाँ, obviously. ठीक है ना? So it is 92% is your 32 minutes. So how much is the 8? 2.7 something. 2.7 आगे 7.6 I guess. 8 तो let make it 2.8 minutes. क्योंकि ज्यादा हम points में जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा.
तो टोटल 100% वी हैव 34.8 मिनट्स। ठीक, अब इसके अंदर हमारा 2 मिनट्स का सेटअप टाइम भी है, तो ऑब्वियसली विल ऐड दैट 2 मिनट्स टू इट। तो पर सैंडविच में हमारा एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है? 36.8 मिनट्स है ना। 32 मिनट्स उसको बनाने में, 8% टाइम दैट इज 2.8 मिनट्स हमारा नॉन प्रोडक्टिव आइडियल टाइम जो होता ही होता है, एंड एडिशन टू दिस 2 मिनट्स का आपका सेटअप टाइम है। तो टोटल टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग फॉर मेकिंग वन सैंडविच इज 36.8 मिनट्स। नाउ इट इज पर आवर, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स और हमारा उससे टोटल कॉस्ट आ जाएगा। निकालो। This is my standard labor cost per sandwich. 0.07 Na. Per minute, na? Make it 36.8. 2.76. 2.76. For one sandwich. No. For 20 sandwiches. For 20 sandwiches, you are preparing 20 sandwiches in 32 minutes, na? This 2.76 is standard labor cost per hour. 20 sandwiches का है ना? हमसे तो divided by 20. 2.76 divided by 20. हाँ, 0.13. पर सैंडविच कितना आ गया? $0.138. If I say ideal, just tell me the minutes. How many minutes are the ideal standard? 32 minutes. Yes. So on base of 32. Because this is attainable. अब मैंने क्या लिखवाया? Attainable always include your ideal time and waste, है ना? Ideal वो कुछ consider नहीं करता. It's a hypothetical situation where जितना time लग रहा उतना ही है. So your ideal time will be 32 minutes for 20 sandwiches, and your attainable standard is 36.8 minutes per 20 sandwiches. ठीक है? The difference between ideal and attainable. 0.12. Then noted. Done. Now let's come to budgeting. Budgeting is preparing budgets. And it is of 3 types: fixed, flexible, and flexed. Fixed, flexible and flexed. Fixed budget होता है, beginning में बनाते हैं.
फ्लेक्सिबल भी हम बिगनिंग में ही बनाते हैं, बट द फ्लेक्स बजट इज एट द एंड ऑफ द ईयर, हम एट द एंड बनाते हैं। फिक्स बजट एक सिंगल लेवल ऑफ आउटपुट के लिए बनाते हैं। फॉर 10,000 यूनिट्स तो हम सारी कॉस्ट 10,000 यूनिट्स पर ले फॉर अ सिंगल लेवल ऑफ आउटपुट। फ्लेक्सिबल बजट्स होते हैं एट डिफरेंट एफिशिएंसी लेवल्स। If my 10,000 is at 80% efficiency, तो मेरे 100 पे कितना होगा और मेरे 60 पे कितना होगा? We take different level of efficiencies in flexible budget. Flex बनता है at the end, taking your actual figures, almost actual figures, on the basis of the actual figures, और ये हम बनाते हैं at the end of the budget period, and the estimate on the basis of actual figures. मतलब at the end जब आप close करने जा रहे हो, then you prepare a flex budget और उसके basis पे आप compare कर रहे हो. And why we prepare all the budgets? Obviously we need to compare. हम क्यों budgets बना रहे हैं? To compare budgets with actuals. और इस process को हम क्या कहते हैं? Budgeting control. इस process को हम क्या कहते हैं? Budgeting control. And the difference between actual and budgets, इसे हम क्या कहते हैं? Variance. The difference is known as variance. Or variance can be favorable if it is in your favor, and adverse if it is not in your favor. A business has prepared the following standard cost card based on producing and selling 10,000 units. Your budget was for 10,000 units. उसकी basis पे your information was selling price was 10, variable production cost is 3, and fixed production cost is 1. See? Make it 4:30 for today. आज मैं 4:30 तक कराऊंगी, जाके मैंने उसी हिसाब से किया। हाँ, नेक्स्ट 5 मार्च। ठीक है, तो your selling price is 10, your variable production cost is 3, and fixed production cost is 1. तो profit per unit will be 6. ये आपका budget. Actual production and sales for the month 1 were 12,000 units. First month में आपने 10,000 सोचा था, but actual कितना हो गया? 12. जिससे you have achieved a sale of $125,000 of a variable cost $40,000 and fixed cost $9,000, resulting in a total profit of $76,000. This is your actual, that was your budget. Now, what is the requirement? Using the flexible budgeting approach, prepare a table
showing the original fixed budget, the flexed budget and the actual results. तीनों बनाने हैं, fixed, flexed and actual, and total meaningful variances. Variances are what? The difference between the actual and the budget. ठीक, for that सबसे पहले calculate per unit. आपको यहाँ से डिफरेंस पता चल जाएगा. कैलकुलेट पर यूनिट, ऊपर पर यूनिट दिया होगा ना हमको. कैलकुलेट पर यूनिट 12,000 units and you are making 1,25,000 sales. So how much is per unit? $10.41. 4142. Make it 40 divided by 12. 3.3 and 9 divided by 12. 9,000 divided by 12. 0.75. And इसी हिसाब से आपका per unit total profit भी अलग आ जाएगा. So there is a variance, right? Now हमने बनाना है original fixed budget. We have the original fixed budget for 10,000 units. Flex budget, we will prepare flex budget for 12,000 units. मतलब 12,000 into 10, your sales should be 1,20,000. 12,000 into 3, your variable production overhead should be 36,000 as per budget. Your budget, you are preparing budget for 10,000 units. For 10,000 units, your sale price is 10 per unit, variable is 3 per unit, and fixed is 1 per unit. Okay, this is my original fixed budget. Now we have to prepare a flexed budget. Flexed budget किस पे होता है? On the basis of actual. तो मेरा actual कितना है? 12,000 units. My actual are 12,000 units. अब उसके basis पे मैं budgeted कितना होना चाहिए था? 12,000 into 10, 12,000 into 3, and 12,000 into 1. तो मेरा profit कितना आना चाहिए था? 12,000 into 6, that is 72,000. This is my flexed budget. अब मेरे actuals कितने दिए हुए हैं मुझे? 125, 40 and 9. Can you tell me the variance, whether it is adverse or favorable? First, मैंने budget किया था 120. Actuals कितना हो गया? 125. Is it a favorable variance or an adverse variance? Favorable. Then sales तो obviously ज़्यादा हो तो better है. My 5,000 is a favorable variance. मैंने cost budget की थी 36,000, but my actually I have incurred 40. Is it a favorable or adverse? Adverse, adverse. Adverse of 4,000. I have budgeted for 12,000, but the actuals are 9,000. Is it a favorable or favorable of 3,000? Right. Favorable of 3,000. मेरा प्रॉफिट मैंने बजट किया था 72 का, एक्चुअल में कितना हो गया? इज इट फेवरेबल और एडवर्स? फेवरेबल ऑफ 4,000. नहीं आएगा. Actually, मैं उसका गया था, वेरिएबल कॉस्ट पे मुझे उसी लाइक क्लियर ना? तो कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो तो ज्यादा बेटर है, राइट? ठीक, तो दिस इज माय ओरिजिनल बजट 1031. दिस इज माय फ्लेक्स्ड बजट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फिगर्स, एंड दिस इज माय एक्चुअल. द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स्ड एंड एक्चुअल इज माय वेरिएंसेस, एडवर्स और फेवरेबल. Original budget 12,000 is my flexed budget on the basis of actual units. This is my actual हुआ जो, and this is my variance. ठीक. From the next class onwards, your timings will be 3 to 5. But for this class, it's 4:30. Okay.
on alternate days only TTS, but it's from 3 to 5. Okay. Today it's till 4:30 only. Because I was not aware of it. थोड़ा सा problem है. All budgets and everything clear. Standard clear. Flexible budgets clear. Done. Ten three one. 12 वाला. और total meaningful variances variance. बिल्कुल. मैं if you can join on the app ना, just join तो उसपे click करना will be easier. Just take a screenshot of it and it's done. Okay, second question, please. It's just the starting now. पिछला revise करा रहे हैं. You are revising MA of the knowledge level. हाँ, I mean to say yes, the concept will be the same, but not this lenient one. एक मिनट बच्चे. Standards of the days, like Standards मतलब your benchmarks. कितना आपने like a path. Or the benchmark, the objective, the goal. That's why it's ideal standard or attainable standards, the attainable benchmark or the attainable goal, ना? Right? अब वो easily हो गया, I guess, है ना? Now let's come back to the cost. हमने types of cost पढ़ा on the basis of direct and indirect, and on the basis of variable, semi-variable, and fixed. Now the cost can also be divided in two things: controllable and uncontrollable. Controllable and uncontrollable. Controllable costs are those which you can control, kind of variable cost. है ना? Procurement of direct material or labor. It is all in your hands. किस type का labor चाहिए, किस type का material चाहिए. That's a controllable cost. But uncontrollable is like theft, fire, COVID, fixed cost. You cannot control. So cost can also be divided in these two things, and the controllable cost is entirely in the hands of the management, right? And इसके basis पर we can basically measure the performance of the management. We can do performance management on the basis of only controllable cost. ठीक है, हम किसी को ये नहीं कह सकते मैनेजर को कि यार तुमने फिक्स कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या फायदा. You cannot say like that ना, वो irrelevant सा लग रहा है. But yes, आप उनको sales target और production cost को reduce करने के लिए you can give them targets. कि भैया अगर ये material 2 रुपए का मिल रहा है, bring it to 0.5. Search any vendor, do any negotiation, bring it to 0.5. That is a controllable cost. और उसके basis पे आप उनकी performance को measure कर सकते हो. If you can bring it to 1.5, that's too good, right? कहीं तो नीचे लाया
है ना, तो परफॉर्मेंस आप उसकी बेसिस पर, अनकंट्रोलेबल पे यू कैन नॉट मेजर द परफॉर्मेंस। तो ये जो आपका कॉस्ट होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट, इट इज बेसिकली you can make any manager responsible for it. A controllable cost is what? If a manager is responsible for it, then it is a controllable cost. If the manager is not responsible for it, then it is an uncontrollable cost. From the point of view of performance measurement. ठीक है? So cost is a controllable cost. Controllable cost if a manager is responsible for it. A manager should always be evaluated on the basis of this cost. आप अनकंट्रोलेबल कॉस्ट पे उसे इवैल्यूएट नहीं कर सकते, उसका अपोजिट इज अनकंट्रोलेबल, हमारे लिए वो रेलेवेंट नहीं है। Concept clear? Next question, the last question of today's class. Test your understanding 5. Clear है? Visible है, I guess. The material purchasing manager is assessed on the total material expenditure for the organization, the cost of introducing safety measures regarding the standard and the quality of material as per the revised government legislation. According to the government legislation, you are introducing safety measures and standard and quality of material, and a notional rent cost allocated by head office for the material storage area. Discuss whether these costs are controllable by manager. These 3 costs are controllable by manager, and if they should be used to appraise the manager. मतलब उसका performance measure करने के लिए इन 3 costs में से कौन सा use होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए. Which cost is a controllable cost or which is not a controllable cost? Notional is kind of imaginary. मतलब आपका वो cost actual में नहीं है, but वो जा रहा है. Notional rental cost. तो इन तीनों में से just tell me कौन सी cost is a controllable cost out of these 3? Why not second? Because it is applied by legislation. Cannot control it, right? Yeah. A third one is obviously you cannot, because it's a rental cost, it's a fixed cost, basically you cannot control it. तो किसके कौन सी cost के basis पर हम उसको appraise कर सकते हैं? Total material cost. This is only the controllable cost, बाकी दोनों तो uncontrollable है. तो वही है, whether these costs are controllable, you have to discuss. The first one is controllable and the other 2 are not. Why? Because you know it. ठीक है? And if they should be used to appraise the manager, the first one should be used, but next 2 cannot. ठीक? With this, let's end it here only. 1 minute. Explain whether a production manager. Okay, let's do test understanding 6 also. Explain whether a production manager should be accountable for direct labor and direct material cost variances. You are now aware of the cost variance. Should the production manager be held accountable for these variances? The production manager. Yes, because like maybe he can negotiate with the contractors and the cost is reduced. Because it's a controllable cost, and you can help the manager responsible for the direct labor and direct material cost. वो इसको influence कर सकता है, yes, वो इसको influence कर सकता है. And the variances is the difference
आप उनको अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हो. इट इज अ पॉजिटिव वेरिएंस, अकाउंटेबल वर्ड नहीं यूज होगा, देन यू आर अप्रेजिंग इट, है ना. अकाउंटेबल आप गलत चीज के लिए करते हो, है ना. जब इनवर्स वेरिएंस होगा तब हम कहेंगे यू आर अकाउंटेबल फॉर इट, बट जब गुड होगा नो वन इज सेइंग यू आर अकाउंटेबल फॉर इट, है ना. यू आर डूइंग गुड, दैट्स व्हाई इट्स अ गुड वेरिएंस, अ फेवरेबल वेरिएंस. बट इफ इट्स अ एडवर्स वेरिएंस तब लोग कहेंगे कि यार यू आर अकाउंटेबल फॉर इट. तो द वर्ड अकाउंटेबल इज फॉर एडवर्स वेरिएंस ओनली. ठीक है. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि ये वर्ड्स ही है ना, यही आपके पूरे क्वेश्चन की मीनिंग को चेंज कर देंगे. द वे यू आंसर द क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन दीज छोटे छोटे वर्ड्स जो इधर उधर से कहीं ना कहीं से ना आपके आंसर को चेंज कर देंगे. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन एवरी सिंगल वर्ड. और ये प्रॉब्लम आता है नॉलेज लेवल में, आया, बहुत आया. मतलब बच्चा परेशान हो गया कि यार एक वर्ड के चक्कर में मैम ये तो आंसर ही बदल गया, हम क्या सोच रहे थे, क्या हो गया, काइंड ऑफ. तो ये आएगी प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अभी से स्टार्ट फोकसिंग ऑन छोटे छोटे वर्ड्स, ताकि आगे जाके मैटर ना करे, तो आपका प्रैक्टिस ही बन जाए. प्रोडक्शन मैनेजर, you are responsible for producing. तो वो मटेरियल भी आप आ रहा है, लेबर भी आपका ही तो आ रहा है. तो प्रोड्यूसिंग इट तो दोनों चीज, वही तभी मैं कह रही हूँ ना, अकाउंटेबल इज लाइक यू आर गेटिंग एन एडवर्स वेरिएंस, तभी यू आर अकाउंटेबल फॉर इट. दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस अकाउंटेबल वर्ड. ठीक है. लेट्स end it here only. नेक्स्ट क्लास फ्रॉम 3 to 5. ठीक है, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे. अभी ये हम रिविजन है, आपका फर्स्ट चैप्टर का नेम ही यही है कि रिवाइजिंग द एमए. वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट, देन विल मूव फॉरवर्ड. ठीक. गुड इवनिंग. ask for the books at the counter only. मतलब आज जो है ना रिसेप्शन पे, ask for the books from them only.